The subject I'm talking about is role of Sanskrit and Gyan in human transformation. Now, role of Sanskrit के बारे में तो आज बहुत आप लोगों ने सुन लिया शायद, और ख़ुद को भी आपको मालूम है यहाँ रहते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के कारण। संस्कृत के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जहाँ से मैं इंडिया से बाहर 50 साल हो गए मुझे रहते हुए, और वहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश की है इस संस्कृत को, अपनी संस्कृति को, अपने वेदास को, योगा को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को इसकी नॉलेज देने के लिए। मेरे एक्सपीरियंस में तो जो मैंने जाना है वहाँ रह के, और द वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ से बहुत डिफरेंट है द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स और दे इंटरनलाइज थिंग, क्योंकि एवरीथिंग देयर इज़ आउटवर्डली। इनर एक्सपीरियंस में लोग बहुत कम जाते हैं। दैट्स वाई इट्स ऑल वेरी साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव। फिज़िक्स है, everything is now the modern physics, new physics is coming very close to understand yoga, Vedas and the Sanskrit as the world's best language or elite language. वहाँ पे अब इन चीज़ों के बारे में जानकारी आगे बढ़ने लगी है। पर स्टिल इट इज़ क्वांटिटेटिव। यहाँ पे क्या फ़र्क है हम लोग जब वो कहते हैं जब आप यू डोंट सी इट व्हेन यू इन इट, समझ रहे हैं ना। जब आप घर के अंदर होते हैं तो आप सारे घर को नहीं देख पाते, आपको बाहर जाना होता है घर को देखने के लिए। व्हेन यू इन इट यू कांट सी इट, व्हेन यू आर आउट ऑफ इट ओनली देन यू कैन सी इट। यहाँ हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद मेरा योगा और वेदास और संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। जब मैं वहाँ साइकोलॉजी स्टडी कर रही थी, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी जो थिंकिंग है इन लोगों की थिंकिंग से डिफरेंट है। ये लोग खाली एक्सटर्नली चीज़ों को समझते हैं, जबकि मेरा यहाँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से गई थी, यहाँ का डीएनए, यहाँ की संस्कृत, तो क्या होता था जब साइकोलॉजी क्लास में हम बैठे होते थे तो वो खाली एक्सटर्नली समझने की कोशिश करते थे, जबकि मेरा होता था कि मैं इंटरनली उसे समझने की कोशिश करती थी। तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। जो बाकी ग्रुप होता था बैठा, वो कहते थे ये कौन सा सवाल है। बाद में वो समझ भी जाते थे कि मेरा जो सवाल है वो इट्स अ डेप्थ इंक्वायरी, वेयर एज दे आर ओनली डूइंग अ सुपरफिशियल इंक्वायरी। तब मुझे समझ में आया कि जो वेस्टर्न माइंड है इज़ गियर्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। इट्स डिफरेंट टू ईस्टर्न माइंड विच वी हैव यू शुड कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी कि आप इस संस्कृति में भले पढ़े हैं, और उसका आपको बेनिफिट ये है कि आप के अंदर आपका जो डीएनए है इट इज़ सच दैट गिव्स यू अ डेप्थ, टेक्स यू इनटू योर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग टू योर डीएनए एक्चुअली। आप खाली बाहर से देख कर खुश नहीं हो लेते, समझने की आप लोगों में क्षमता बढ़ती है। जो रोल संस्कृत है इस वर्ल्ड्स अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड इस 5000 ईयर ओल्ड, बट हम सभी जानते हैं कि संस्कृत इज़ नॉट 5000 ईयर ओल्ड। इट हैज़ नो लिमिट ऑन इट हाउ ओल्ड इट इज़। संस्कृत का क्रिएशन हुआ है थ्रू आवर ancient yogis, and yogis were scientists. They were हमारे सप्त ऋषि हैं, they all specialize in 7 different kind of power within us,
एज ह्यूमन बीइंग. तो दैट्स वाई जब हम लोग अपना गोत वगैरह देखते हैं तो उससे पता लगता है कि कौन सा हमारा एंसेस्टर ऋषि है और वो किस चीज़ में साइंटिफिकली एडवांस था और हमारे अंदर उसके डीएनए हैं. तो बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो दे वर साइंटिस्ट और उन्होंने जब संस्कृत, मैं नहीं जानती कब इन्वेंट हुई है, बट दो साइंटिस्ट लर्नड अबाउट the physical vibration of sound also. Just what is language? Language is a sound. Yeah? Sound has a vibration, and vibration is, what is vibration? ये vibrate करते हैं, बिना vibration we won't be alive. Yeah? Everything vibrates within our body, outside our body, inside it. So it's due to the vibration we are alive. We exist because of the vibration. So everything is vibration. And जो नई physics है इनकी, now they are working on that how the vibration affects. And the Sanskrit is the only language which every word gives you the different vibration. And when it gives you, when you utter a Sanskrit like, हम कहेंगे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, how you say it, सर्वमंगल मांगल्ये. अगर यही आप किसी वेस्टर्न इंसान को बोलने के लिए बोले, वो ऐसे नहीं बोल सकेगा. सर्व, he won't be able to know where your tongue should be touching, how you should be, the sound you should be creating. उनसे सही साउंड होता ही नहीं, इसलिए उन पर मंत्रा का असर नहीं होता, क्योंकि वो दे कांट प्रोड्यूस. सो लैंग्वेज इज़ नॉट रिलीजियस. कोई भी लैंग्वेज रिलीजियस नहीं है. इट्स द संस्कृत इज़ द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज विच द वे इसके जो ग्रामर है, इट हेल्प्स यू if you do it properly to bring the vibration in the different region of your body, and it stimulates those cells in your body according to physics. And when they stimulates, your brain also expands. So the Sanskrit language is just ये कहने की जी संस्कृत है, हम खुश हैं, ये अच्छी लैंग्वेज है, ये दैविक लैंग्वेज है, नहीं. ये ह्यूमैनिटी के लिए, फॉर आवर एक्सपेंशन, फॉर आवर डेवलपमेंट, दिस लैंग्वेज is the only language in the world who can do all that. What is important for a human to accelerate human potential. For us to get to our highest potential, the language is very important. No matter you're poor, rich, educated, uneducated, everybody needs language. And if you're speaking this Sanskrit language, you won't need a master's degree or doctor's degree or anything. Your cognitive functions will be very, very high, will be very improved. So that's why सुबह मैं बोल रही थी कि वहाँ पे scientific research on Sanskrit have न्यूरोलॉजिस्ट जो वहाँ के हैं, जो आजकल वहाँ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, तो इस पे बहुत काम हो रहा है न्यूरोलॉजी पे. तो उन्होंने इसको नाम दिया है द संस्कृत इफेक्ट, एंड दैट इज़ दे गिव पीपल टू अटर सर्टन मंत्रास. सो व्हेन यू डू दोज memorizing these Vedic mantras increases the size of brain region associated with cognitive functions such as memory. So आजकल डेमेंशिया हो गया लोगों को, छोटे छोटे कम इतनी उम्र में हो रहा, लोगों की cognitive functions they are not functioning very well, and that is also associated with your prana shakti. So संस्कृत के बारे में तो मैं अलग से जो बाकियों ने कहा उससे अलग तो यही आपको कह सकती हूँ कि दिस इज़ आफ्टर द इट्स ए लाइट लैंग्वेज. देयर आर ओनली 3 मोस्ट spiritual language in the world.
Hebrew, Sanskrit and Latin. Now Sanskrit comes on the top, but Latin and Hebrew and Sanskrit, they all share a lot of things in between them. Okay? So there's no time to talk about that now, but then I will come back to ज्ञाना, because मेरा सब्जेक्ट है ज्ञाना इन ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन. ज्ञान के बारे में आपको पहले भी मैंने कहा कि जब हम कहते हैं ज्ञान तो ऑटोमेटिकली वी रिलेट टू नॉलेज without knowing what kind of knowledge. Somebody have ज्ञानी है तो कहेंगे he is knowledgeable, और somebody is knowledgeable या आप कहेंगे ज्ञानी है. So knowledge, what is, when हम ज्ञान को simply कहते हैं knowledge, then it's related to knowledge in the sense that it's accumulated information about external world, not internal world, like a history, geography, economics and any other science. So whereas Gyan is an internal process of self-discovery, it is not information, it is transformation. Now there is a difference between transformation and change. Change is a law of nature, everything is, every second as we talk are changing. But transformation कहाँ से होती है? It's individual. We transform karma. जब हम कर्मा करते हैं, जैसे कृष्णा ने कहा कि कर्मा योगा is the most important yoga. Through karma only we develop our other faculties. अब बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे भगवान आके सब कुछ कर देगा, you be useless. What you don't use, you becomes useless. So karma is very important. So हमारी बॉडी, अदरवाइज हम लोग सतयुग की तरह होते, हमारी बॉडी नहीं होती. वी कुड हैव जस्ट थ्रू आवर फ्रीक्वेंसी वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट वी हैव गिवन बॉडी, एंड बॉडी इज टू डू विद मोबिलिटी. Okay. All right. So transformation is different than change, and transformation is not external, it's internal. So it is. So what is Gyan? Gyan is a transformation through a backward journey to our source of origin, a journey of alone to be with alone. Okay. We are born alone, we will die alone, but our divinity to understands in a way self-realization, what we call, realizing yourself that I am not a useless tiny human being. Realization is that I am beyond everything. I am, because divine is within me. भगवान वहाँ ऊपर नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है. It is within you. You won't be alive. It's not just that people produce children, right? It wouldn't happen without divinity. It will not happen. It's the biggest miracle of the world is you. How you operate, how you walk, how you think, how you do. People look for miracles everywhere, but you are the biggest miracle. Look at yourself. See, you are the universe. Everything in the universe. What is yoga? We just talk about yoga. That's a unity with the body, mind, and your higher self. No. Yoga is your relationship with the universe. When actually the people who call themselves Jnani is different than the person who is Jnani. So as I said this morning, Jnana comes from the source word Jnat. Jnat means your understanding of yourself. So understanding of our existence, fusion of thoughts
and actions, knowing and being, not just knowing and doing. So when we stop from doing to being, we make a relationship with ourselves. Normally it's a sad that people don't, they are looking, they talk about ये मेरा mother, माँ है, ये पिता है, ये दादा दादी है, ये भाई बहन है, but they don't know, they don't even have an idea what is their relationship with themselves, how they treat themselves. Huh? Do you treat yourself respectfully? Do you respect your wishes? Or do you beat yourself? ये ना मैंने ये गलत कर दिया. I was so stupid. I was silly. What do? And that tells your relationship with yourself. If you're beating yourself all the time, calling yourself silly, thinking you're less than the person who is sitting here or over there, yeah, then you don't respect yourself, then you don't love yourself, then you don't have relationship with yourself. So, भगवान को जानने के लिए to get self-realized, it's important that you know yourself first. Ask yourself this question, who am I? कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? Why I am here? Self-inquiry. Inquire yourself. Only when you know yourself, you will know God. And only when you know God, you will have Gyan. When you become Jnani, there is no duality. There is no good, there is no bad, there is no wrong, there is no right. There is like this morning, Tripathi Ji ne mention kiya Satyam Shivam Sundaram. Now, मैं थोड़ा सा और इसे आगे ले जाऊंगी. सत्यम, सत्य हम सब सुनना चाहते हैं पर जानते नहीं उसे. Shivam is which is never changing, which is the ultimate consciousness, higher consciousness. Shivam. Sundaram is, we simply translate as beauty. But when you become Jnani, then only you can see Sundaram. Because then you are not in duality, you don't see good, bad, you don't compare. This one is better than this one is wrong, this one is no comparison. You only see beauty. You don't see anything else. So you will only see ugly and beautiful when you are in duality. When you are a Jnani, no matter how many degrees you have, you are a Jnani when you are in duality. Only when you get out of duality, you see everybody like you. You see yourself in everybody and everybody in yourself. Okay? And that's what is the spirituality is about. Okay? You say you don't see anything, you see God in everything. People say that, but they don't understand what that means. That means that you do not discriminate, you do not judge. There is nothing to judge for you. And that's when you are Jnani. Yeah? There were a lot of Indian saints who were totally uneducated, but they were Jnani. So the supreme and external knowledge is Atmagyan. Atmagyan, like मैंने कहा पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ. Then as soon as you know मैं कौन हूँ, you don't need any guru. You will automatically begin to understand what Atma is. And when you know the Atma, you will know what Paramatma is. There is no shortcut there. That you read some books and you will know Paramatma. No. Okay? So, self-realization is the experience that we are not separate from God, but are one with God and all of life. That is, when you don't judge,
anything, you see another like you, and whether you see me like you or not, but if I see you, that what my relationship with myself is like your relationship with you. So when these realizations dawns, the boundaries of the intellect are crushed. Does it make sense? Yeah? When this realization dawns upon you, that you are not separate from anything, you are in everything, and everything is within you. Cosmology, if you study cosmology, microcosm and macrocosm, right? You are the microcosm. So microcosm, you are the meaning of that. But everything, and that's what the Tantra Yoga is about. Everything which is up there is in you. You only need to accelerate it. That's it. Hari. Okay, so that's all I have been told now to finish here. So I'm finishing. This is a never-ending subject. Yeah? Knowledge is eternal. There's no beginning, no end. And we are all eternal in a way, because physics says we are a bundle of energy. And energy can never be destroyed, it can only be transformed. So when you transform your energy, you can self-realize, and you can then say, Aham Brahmasmi, I am God, because you realize that. Regarding Professor